Good morning, students. As we have discussed flip-flops earlier in class also, but for next topic, counters or shift registers, we have to revise these flip-flops. So today we will discuss flip-flops. Flip-flops are the basic elements which is used to store data in the form of bits. That means it is used to store only one bit. Flip-flops one bit को store करने के लिए use होते हैं. And it is also a बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. इसे हम बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स कहते हैं, जिसमें 2 स्टेबल स्टेट्स होती हैं, चाहे वो लो हो या हाई हो. इट हैज़ 1 or more inputs and 2 outputs. Out of these 2 outputs, one is normal and second output is the complement of first output, as shown in this diagram. There are different types of flip-flops: SR, D, JK and T. So firstly, we have to discuss SR flip-flop. SR flip-flop में क्या है, हमारे पास 2 inputs हैं, S and R, and the main input is clock input, which is used for triggering these devices. Triggering means to perform in a proper way. अगर हम क्लॉक अप्लाई करेंगे तभी हमारे फ्लिप फ्लॉप्स प्रॉपरली फंक्शन करेंगे. अदरवाइज आपने कोई भी इनपुट चेंज कर लो, अगर क्लॉक नहीं अप्लाई करेंगे तो आउटपुट चेंज नहीं होगी. तो ये है हमारा SR फ्लिप फ्लॉप. ये इसका लॉजिक सर्किट है जिसे हम नैंड गेट्स को यूज़ करके ड्रॉ कर रहे हैं. 2 इनपुट्स हैं S एंड R एंड द थर्ड इज द क्लॉक इनपुट. यहाँ नैंड गेट यूज़ किया है. नैंड गेट की आउटपुट्स दूसरे नैंड गेट में दी हैं, जिनकी आउटपुट्स जो हैं हमारे पास 2 आउटपुट्स हैं, Q एंड Q बार. यहाँ से फीडबैक लिया है हमने इन नैंड गेट्स के लिए. ओके, एंड स्टार्टिंग में हमें फ्लिप फ्लॉप्स के केस में एज्यूम करना होता है कि हमारी जो आउटपुट्स हैं Q एंड Q बार, इनकी वैल्यू हम लेट करके चलते हैं. लेट Q इज इक्वल टू 0 एंड Q बार इज इक्वल टू 1, बिकॉज Q is feedback into this NAND gate and Q bar is feedback into this NAND gate. So we have to let these values first and then we will start from it. There are 2 inputs S and R. So we have 4 values, that is 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. Clock is always high. That means 1. In first case, when our input is 0 and the 0, these are the 4 cases for inputs. So our first case is when input S is equal to 0 and R is also 0 and clock is always 1. And we have let that Q is 0 and Q bar is 1. So when input S is 0 and the clock is 1, then the output of this gate is 0 into 1. It is NAND gate, and the output of NAND gate is the complement of the multiplication of both inputs. If input is 0, then output is 1. If any of the input of NAND gate is 0, then output must be 1. So S is 0, clock is 1. That means 0 into 1, 0, and output is 1. Similarly, in case of R input, when this is 0 and clock is 1, so its output is also 1. Because 0 into 1 is 0 and its complement is 1. Then, so input to this gate is this 1 and input to this gate is this 1. And Q bar, which is 1, is fed to this gate. So this is also 1. So 1 into 1 is 1 and its complement is 0. So in first case, output is 0. And this 0 is fed back to this gate and its 0 into 1 is 0 and its complement is 1. So for 0 0 inputs, outputs are, and Q, we get Q and Q bar is Q bar. That means it's no change. We get same outputs. The next case is 0 1.
S is 0, R is 1. Clock is always 1. So similarly, same procedure. 0 into 1 is 0 and its complement is 1. 1 into 1 is 1 and its complement is 0. इसी तरह से यहाँ पर दिस क्यू बार इज 1 और ये 1 यहाँ फीडबैक होगा इस गेट में, तो यहाँ पर क्या होगा 1 into 1 is 1 and its output is complement is 0. ये 0 इधर फीडबैक होगा, this is feedback into this gate, so 0 into 0 is 0 and its complement is 1. So output for 0 1 input is 0 and 1. In this case Q is 0 and 0 means reset. As this is SR, SR is set reset flip flop. So for third case, when input is 1 0, S is 1, R is 0, clock is high. 1 into 1 1, complement 0. 1 into 0 0, any of the input is 0, then output must be 1. एक भी input 0 है तो output 1 होगा. So 1 into 0 0, output complement 1. Similarly, this 1 is feedback into this gate, तो ये 1 यहाँ feedback होगा, तो 0 into 1 is 0 and its complement 1. फिर ये वाला 1 यहाँ आएगा, तो ये 1 into 1 1 complement 0. तो 1 0 जब आपकी इनपुट है तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है 1 0. Q is 1. 1 means set. Similarly, the last case is when S and R both is 1. Both are 1. S भी 1 है, R भी 1 है. क्लॉक हमेशा 1 है. 1 into 1 1, आउटपुट कॉम्प्लीमेंट होकर 0. 1 into 1 1, आउटपुट कॉम्प्लीमेंट होकर 0. ऐसे ही ये वाला 0 यहाँ फीडबैक होगा, 0 into 0 0, कॉम्प्लीमेंट 1. ये वाला 1 यहाँ आएगा, 1 into 0 0, कॉम्प्लीमेंट 1. मीन्स दोनों आउटपुट्स आपकी 1 1 आ गई, लेकिन ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज Q और Q बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है. सो दिस कंडीशन इज इनवैलिड. दोनों आउटपुट सेम नहीं हो सकते, इसलिए ये कंडीशन आपकी इनवैलिड है. ये है आपका SR फ्लिप फ्लॉप. 2 इनपुट्स हैं S एंड R, तो उनके लिए हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. तो इन 4 आउटपुट्स के लिए इनपुट्स के लिए हमें आउटपुट्स को चेक करना है कि हमारे पास क्या आउटपुट्स आ रही हैं. आउटपुट यहाँ फीडबैक है, तो इसके लिए हमें पहले इन आउटपुट्स को लेट करना पड़ेगा कि Q 0 है और Q बार 1 है. उसके अकॉर्डिंग गेट्स को वेरीफाई करके हम इस वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट केस 0 0 के लिए हमारे पास आउटपुट आ रही है सेम Q एंड Q बार, दैट मीन्स नो चेंज. फॉर सेकेंड इनपुट 0 1 हमारे पास आउटपुट 0 ही आ रही है Q पे, दैट मीन्स रीसेट. 1 0 के लिए Q पे 1 ही आ रहा है, दैट इज सेट. एंड फॉर 1 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1, आउटपुट विल बी सेम, बट दैट कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, so it is invalid.